नंबर से ना 24, 25, 26 वो नंबर चेंज होते जाना जब भी ये रो नंबर चेंज होते हुए दूसरा नाम को देखता है उसी लिए। सो आई लॉक द कॉलम बट नॉट द रो, दैट्स कूल। कामा टेबल एरे। So table array, where is the table array? Table array means this entire table from top to bottom. You select this whole table, shift control right arrow, shift control down arrow, select this whole table, use the F4 key. Once you use the F4 key, it will lock completely. फिर से करता हूँ मैं, like table array बोल के है ना, table array के पास क्या करते हैं? So select this topmost cell, shift control right arrow, shift control down arrow, and use the F4. When you use the F4, it is locked completely. Okay, comma column index number. In place of column index number, what do you write? In place of column index number, we are going to write it as, so अपन को क्या चाहिए? सौથી में हमको एम्प्लॉय आईडी चाहिए। एम्प्लॉय आईडी कौन सा कॉलम में है? सेकंड कॉलम में। डोंट टेल इट इज इन एच कॉलम, टेल दैट इट इज इन द सेकंड कॉलम। यू राइट दिस नंबर कॉल टू कामा फोर्थ आर्गुमेंट के बारे में पूरा भूल ही जाओ। जस्ट ब्लाइंडली लिखो कि फॉल्स। फॉल्स बोलते क्या है? एग्जैक्ट मैच। आप फॉल्स लिखते हैं नहीं तो जीरो लिखते हैं, बोथ का मीनिंग सेम है। ऑलवेज राइट द जीरो। जीरो मीन्स एग्जैक्ट मैच बोल के। फॉल्स भी लिख सकते हैं, वो भी एग्जैक्ट मैच ही है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ यू सी हियर इट इज गिविंग स्वाति मदम का एम्प्लॉय आईडी दे रहा है। देखो स्वाति मदम का एम्प्लॉय आईडी क्या है? EMP 0553। यस इट इज गिवन इट। If I drag it down, other people का भी एम्प्लॉय आईडी दे रहा है। Guys, is this clear? Sir, If I please drag, repeat once. yeah, I know Prashant will be asking this. So if I drag right side, so not only employee ID of these people, oh, in place of department, it is also giving the employee ID only. Here also it is giving the employee ID only. Here also it is giving the employee ID only of these people. So क्यों बोलते हैं यहाँ इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखे थे। डिपार्टमेंट के लिए क्या है नंबर? वो 2 नहीं है ना। डिपार्टमेंट कहाँ है? डिपार्टमेंट क्या है बोलते थर्ड कॉलम है। सो 3 बोल के लिखना था। अगर डेजिग्नेशन है तो 4 बोल के लिखना था। रीजन है तो 5 बोल के लिखना था। सो लोग क्या करते हैं बोले तो यहाँ जाते हैं, डिपार्टमेंट बोलते 3 है ना बोल के 3 बोल के लिखते हैं और इसको फॉर्मूला को ड्रैग नीचे करते हैं। रीजन बोलते हो क्या है? वो 5 है, 4 नहीं। वरना बोलते चीटिंग कर लो। ऑलरेडी अपन लिखे थे ना, रीजन बोलते 5 बोल के, साले बोलते 6 बोलते, ये तो फॉर्मूला के साथ आ रहा था, राइट? सो इंस्टेड ऑफ आई डू मैनुअली 1 बाय 1 है, यहाँ 2 यहाँ 6 ऐसा लिखने के सिवा मैं फॉर्मूला में ही मैच लिख दूंगा। ये वीलुकअप के अंदर ये कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, इसके अंदर ही मैं मैच फॉर्मूला लिखता हूँ। सो मैच फॉर्मूला लिखे तो क्या होता? ये सैलरी बोलते 6 बोल के लिख देता है कॉलम इंडेक्स नंबर प्लेस। यहाँ एम्प्लॉय आईडी है तो 2 बोल के लिखता है। क्यों बोलते ये मैच फॉर्मूला जो भी है ना, वो फॉर्मूला इसके वीलुकअप के कॉलम इंडेक्स नंबर के प्लेस में लिखने वाला है। सो इसको भूल जाओ, ये सिखाने वाला हूँ, ये 2 बार करूँगा मैं, डोंट वरी। बिफोर यू आस्क आई विल डू इट ट्वाइस। 2 बार नहीं 3 बार होना बोलते तो भी बोलूँगा, मगर अच्छा सुनो। सो सी दिस इक्वल टू VLOOKUP, lookup value, lookup value will be always one value, let me look into this value। मगर इसको अच्छा फ्रीज करना है। कहाँ फ्रीज करते हैं? ओ को फ्रीज करो, 35 को मत फ्रीज करो। क्यों ओ को फ्रीज कर रहा हूँ? पूरा नाम पूरा ओ में है, उसीलिए ओ को फ्रीज करने वाला हूँ। 35 को नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? 35 इफ आई ड्रैग डाउन, 36 37 दूसरा नाम भी सेलेक्ट हो रहा है ना, उसीलिए। सो व्हेन आई यूज F4 फर्स्ट टाइम, इट इज लॉकिंग कॉलम एंड रो, बट वी नीड टू लॉक ओनली कॉलम। सो उसके लिए F4 सेकंड टाइम प्रेस करो, F4 वन मोर टाइम प्रेस करो, सो दैट कॉलम इज लॉक बट नॉट द रो। कितने बार F4 यूज करने हैं ऐसा मगअप मत करो। क्या लॉक करना है आपको समझ में आना, उसके हिसाब से यूज कीप यूजिंग F4 टिल यू गेट द रिक्वायर्ड फ्रीजिंग। So this is the lookup value, comma, table array. So once you give this lookup value, it is asking for the table array. Where is the table array? Table array is the master data. I'll go here, control up arrow. You see this? Shift control right arrow to select all the headers. Shift control down arrow to select till down arrow or to till down. After this, without fail, बोलो मत या for use करो। क्यों बोलते मैं बोला था ना, कहाँ भी array नहीं तो table array lookup array ऐसा बोल के दिखे तो सिलेक्शन करने के बाद या for use करो बोला मैं, यूज कर दिया। और $4 भी दिखना है, दिख रहा है यहाँ। comma column index number। इन प्लेस ऑफ कॉलम इंडेक्स नंबर एर्लियर वी रिटर्न द एम्प्लॉय आईडी चाहिए अपन को। एम्प्लॉय आईडी सेकंड कॉलम में है बोल के 2 बोल के लिखे थे। नहीं मुझे एम्प्लॉय आईडी ने सैलरी बोलना बोले तो ये सैलरी 6 कॉलम में है बोल के 6 बोल के लिखते थे। मगर एक कितने बार लिखते हैं? उसके सिवा अपन ऑलरेडी यहाँ लर्न करे, मैच का फॉर्मूला यहाँ लिखे थे। एम्प्लॉय आईडी बोले तो 2 बोल के बता रहा था, डिपार्टमेंट बोल के 3 बोल के बता रहा था, राइट? सो सेम मैच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट हियर, ब्रिंग इट हियर, आई राइट दिस मैच lookup value। What is the lookup value? I am looking for this value. I use it for a couple of times so that row is locked but not the column. Why I'm locking the row? Because if I go down, 34 should not change it to 35, 36 and so on. Why I'm not locking the P? Because P should change it to Q, then only it will pick the department, region and so on. So comma, lookup array. What you're looking for? You're looking for some headers. So select this entire headers, lock it completely, comma 0, bracket close for the match. Just for your understanding, you can select this column index number. Once you select it, you can see that output called 2. Match का output क्या है? 2 आया। वो output VLOOKUP का column index number हो गया। So comma, this 0 is for the VLOOKUP. Bracket close and enter. Now drag the formula down, drag the formula to right. That's it. Is this clear, guys? Sir, please repeat. Yeah, I'll be doing that.
Let me delete this. I'll write equal to VLOOKUP. Lookup value is this. Lock it properly. This locking is not a new, guys. This locking we learned last time itself. If you would have practice, अगर आप ये VLOOKUP फॉर्मूला इतना टफ नहीं दिखता था, आपको क्यों टफ लिख रहा है बोल रहे हो? क्यों बोलता प्रैक्टिस नहीं करे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करे उनको प्रैक्टिस करे उनको ये तो इजी है। तो VLOOKUP दिस लुकअप वैल्यू का टेबल एरे। टेबल एरे बोले तो ये पूरा टेबल को सिलेक्ट करो, लॉक कर दो। उसके बाद मैच फॉर्मूला बोल के लिखो। मैच फॉर्मूला में वो पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू एक एक देखते हुए देना है। यूज F4 comma lookup array is this entire range, lock it completely, comma 0, bracket close for the match, and this 0 is for the another match. Drag the formula down, drag the formula to right. That's it. Got it? एक बार प्रैक्टिस करते क्या? फॉर्मूला ऐसे ही ओपन है, आप लोग सर प्रैक्टिस करो। सर मैच का लुकअप हेलो किया। मैच का लुकअप वैल्यू देखो, ये एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है? ओके सर। Employee, yeah. So take 5 minutes time and do practice, guys. Go to the most popular formula, go to the cell called P35, फॉर्मूला लिखो। आपको कहाँ भी डाउट है तो यहाँ देखो, मेरा P35 सेल में ये फॉर्मूला है, मगर पहले आप ट्राई करो, नहीं है तब यहाँ देखो। ओके, राइट नाउ।
Guys, is it done? Yeah. Anyone stuck anywhere? No, sir. It's good. Okay, good. Cool. Let me show you one more example here. This time I'm writing the same VLOOKUP formula, but here you see there is some extra spaces. You see, Swatimatam. How hard you try VLOOKUP formula, it will throw an error. So we need to remove these extra spaces. This lookup value cannot be this one because this value and in the master data, that's Swatimatam, not same. If you're a hardworking person, you'll go here and you remove these extra spaces like this manually. ऐसा तो नहीं कर सकते ना एक एक का. So instead we'll write the equal to VLOOKUP. So I'll write the trim on this text uses locking properly same as the previous bracket close. अब देखो lookup value क्या हो रहा है, ये trim की वजह से स्वाति मतलब properly आ रही है. Extra spaces पूरा गया है, यहाँ बहुत extra spaces है, मगर after applying the trim on this lookup value it is gone that extra spaces, so then it is fine. Comma table array, where is the table? Table is here. Select this whole table including the headers, shift control right arrow, shift control down arrow, use your photo locking. Comma column index number, in place of column index number we'll write the same as the previous, we'll write the match formula. Right here we are going to write the match lookup value. What is the lookup value? I'm looking for this value. use F4 couple of times so the row is locked but not the p को क्यों लॉक नहीं करा, केवल तो p क्यों चेंज होना है, क्यों r चेंज होना है. देखो p क्यों चेंज होना है, r जब भी सैलरी एम्प्लॉय डेजिग्नेशन को पिक करता है. रो को क्यों लॉक करा, अगर नीचे ड्रैग करो तो 58 नॉर्मल 59 होता है, ये लॉक करा बोल के चेंज नहीं होता है. Comma lookup array, you are looking for this header, where in this headers select this whole headers, lock it without fail, comma 0 bracket close for the match, and this 0 is for the VLOOKUP. Earlier 0 is for the match, this 0 is for the VLOOKUP. Bracket close and enter and drag the formula down. Oh ये तो एरर है क्यों, oh, यहाँ सैलरी में भी एक 0 है, एक स्पेस है, यहाँ भी ट्रिम लगा देंगे. ट्रिम ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. नो ड्रैग इट डाउन, ड्रैग इट राइट. देखो दिस इज वर्किंग फाइन नाउ, दिस इज वर्किंग. स्वाति मदम को आ रहा है, अब्दुल रजा को भी दे रहा है, मगर कटरीना कहीं पर रिकॉर्ड एरर आ रहा है. व्हाई सो, व्हाई इट इज शोइंग द एरर फॉर द कटरीना, कैन एनीवन गेस? जयेश पवार. टेबल में नहीं थी. सॉरी जयेश. वो नहीं है टेबल में. टेबल में नहीं Absolutely. है. She is आपने not कहा तो. available. Yeah, Katrina Kaif is not available in this data set because she is available in Bombay, not here with us. Right? So you don't find her here. So obviously it will throw the error. But ऐसा error बता रहे तो अच्छा नहीं दिख रहा है. So क्या करेंगे? Instead of error, can I write? Instead of error, I want to write it as something else. So this employee not available, something ऐसा लिखना है मुझे. So can I use this if error? इफ एरर, यहाँ प्रॉब्लम है बोल के यहीं इफ एरर मत लिखो, कुछ भी चेंज करते हैं फर्स्ट सेल में करना है, वही फॉर्मूला पूरे को सेल्स को ट्रैक करना है. सो आई राइट इट इन द फर्स्ट सेल इफ एरर. अब देखो ठीक तरीके से, इफ एरर इज आस्किंग फॉर द वैल्यू, दैट वैल्यू वी गिवन फ्रॉम द VLOOKUP. इफ दिस VLOOKUP फॉर्मूला इज गिविंग द एरर, पुट द कामा, वैल्यू ऑफ एरर प्लेस, यू राइट दैट इन द वैल्यू ऑफ एरर में आप लिखो कि लाइक आई राइट इट एज एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, एंटर. ये एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल बोल के नहीं बता रहा है, क्यों बोलता अवेलेबल है ना, एरर नहीं है ना. नीचे ड्रैग करें तो जब आ रहा है एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके गुड. नाउ एक होमवर्क आपके लिए है, यहाँ एम्प्लॉय नेम दिया हूँ, मुझे मेल आईडी चाहिए. मेल आईडी कहाँ से आएगा, टेबल वन में तो मेल आईडी है ही नहीं, कहाँ से लेके आएंगे. आप क्या करोगे तो एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी लेके आओ, एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द टेबल वन. वंस यू गेट द एम्प्लॉय आईडी, यू सी दिस राइट साइड, यहाँ है देखो एम्प्लॉय आईडी है तो आपको मेल आईडी भी मिल जाता है राइट साइड, दैट इज द सेकंड टेबल. यू सी हियर इज द सेकंड टेबल, और टेबल में एम्प्लॉय आईडी है और मेल आईडी भी है. सो उसके हिसाब से आप लेके आना. So once again, I'm telling, using this employee name, get me the mail ID. But that cannot be done directly from this employee name. From the table one, you get the employee ID. Once you get the employee ID, you write the VLOOKUP once again by using this lookup value and get the mail ID. Sorry. Yeah. So that's your homework. Do practice well. I'm sharing this file. Yes, please. सर मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है. बोलो बोलो, what is the problem? हाँ सर, आपने जो अभी करने दिया था ना, तो उसमें मेरे को स्वाति मतम को छोड़ के बाकी सब में जो नहीं आ रहा वैल्यू, तो ये क्यों कैसे बोले तो क्यों आप हो रहा फ्रीजिंग फ्रीजिंग अच्छा नहीं करें. आप स्क्रीन शेयर करो, मैं बता दूंगा. 99% ऑफ द टाइम्स फर्स्ट वैल्यू काम करके दूसरा पूरा काम नहीं कर रहा, तो नथिंग बट यू डिड ए मिस्टेक इन द फ्रीजिंग. आप आपका स्क्रीन शेयर करो. गाइस, आई शेयर द फाइल इन द चैट बॉक्स, यू कैन डाउनलोड इट. या सो गो टू द फर्स्ट सेल. या फर्स्ट सेल में है O47 को लॉक करें. O47 का है O47, हाँ थोड़ा डबल क्लिक मारे. ओके
हाँ P34 में P34 को लॉक करना है ना, 34 को P34 में, या 4 वन टाइम एंड सेकंड टाइम, या एंटर, एंटर, एंटर करके ड्रैग राइट ड्रैग डाउन करो। काम कर रहा है, राइट साइड भी ड्रैग कर लो। कॉपी पेस्ट कर लो, उतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं। ड्रैग डाउन, हाँ शिफ्ट कंट्रोल समझ डाउन, में आ गया सर। या ओके। हाँ मैं जी हाँ बोला जी। था ना 99% ऑफ द टाइम्स हाँ फ्रीजिंग। मैंने उसको फ्रीजिंग नहीं किया था पी हाँ थर्टी वही फोर को। तो फ्रीजिंग का ही मिस्टेक होगा, इसीलिए मैं लास्ट वीक में जब फ्रीजिंग का टेक्निक बताने के टाइम में बहुत बहुत बोल रहा था, ये सीखो प्रैक्टिस करो, ये नहीं है तो कुछ भी फॉर्मुलास नहीं आएंगे। एटलीस्ट नाउ यू डू प्रैक्टिस ऑफ द फ्रीजिंग टेक्निक्स गाइस। ओके फाइन गाइस, आई होप यू हैव डाउनलोडेड द फाइल। Okay. Fine then. One thing, yeah, forget to ask you. Yesterday there was no class, right? So we'll have class tomorrow, like same 7:30 to 9:30. So hope you guys are okay with it. Okay, right? Yes, Like, sir. do you Yeah, want us sure, Hello, I'm to? hello, okay. hello, hello. Actually, sir, I'm not available at 7:30. Sorry. Actually, sir, I'm not available at 7:30 because I have job to do. Maybe Hmm. it will be possible. I reach home at like 7 p.m. and then I have to just take a break of like 1 hour. So, Correct, but like for only for tomorrow, please adjust now. okay, okay, Okay. I'll Yeah. try. Yeah. Okay. If anyone cannot make it, like I request to listen the recording. So we'll do it tomorrow itself. Okay, guys. सर तबीयत ठीक है अभी Okay, आपकी? sir. हाँ मेरा तबीयत एक्चुअली कल भी ठीक था। मेरा जीजा जी लाइक ठीक नहीं थे। सो प्रॉब्ली माई टीम मिसकम्युनिकेट टू यू लाइक, सो आई वाज गुड यस्टरडे आल्सो। सो वन ऑफ माय लाइक आई मीन मेरा जीजा जी लाइक उनका हेल्थ अच्छा नहीं था, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। सो अदरवाइज आई एम गुड। नहीं सर, हमें बोला गया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं उनका सब मिसअंडरस्टैंडिंग, आई मीन मल्टीपल मेंबर से Actually, कम्युनिकेशन जाता है actually, ना। मैंने मेल पे वही आया था कि आपका तबीयत खराब नहीं नहीं मैं ठीक ठाक हूँ, मीडिया भी टर्न ऑन कर दिया मैं। Yeah, we thought same that you are unwell, I think so. नो 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 आई एम परफेक्टली ऑल राइट। That's it. ओके फाइन, थैंक यू। सो डू प्रैक्टिस गाइस, मैं स्टार्टिंग डे वन से वही बोल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना है। ओके सो नेक्स्ट क्लास बहुत कुछ सीखने वाले, पिवट टेबल्स, मैक्रोस। सो ओके हेलो सर। या यस प्लीज। लास्ट टाइम आपने करने दिया था सम इफ एवरेज इफ वी लुकअप मैच और इंडेक्स, तो सम इफ और एवरेज इफ कोरिलेटेड और मैच और इंडेक्स कोरिलेटेड है क्या? मैच और इंडेक्स। हाँ इंडेक्स एंड मैच भी कोरिलेटेड है, वीलुकअप और मैच भी कोरिलेटेड है या बट ये सारे हम किसी ना किसी चीज के लाइक कोई तो पॉइंट ढूंढने के लिए यूज करते हैं ना, तो इतने करेक्ट। अलग अलग क्यों है ऐसे? अलग अलग क्यों है बोले तो लाइक सी सी सम इज फॉर व्हाट, फॉर समिंग, सम विद द यस। कंडीशन। एवरेज किस यस। लिए, एवरेज करने के लिए बोले तो यस। सी दैट इज अ सम, दिस वन इज एवरेज। सो आपको सम होना है, एवरेज होना है, क्या होना है देखना है ना, उसीलिए। सो बराबर। करेक्ट, लाइक एक एक का एक एक रिक्वायरमेंट है, एक एक फंक्शनलिटी है। ओके। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू नीड टू पिक द अप्रोप्रिएट वन। अब देखो विराट एक कोहली का दूसरे के लास्ट अंदर यूज 10। कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली एक के एक फॉर्मूला के अंदर दूसरा कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, वो विराट कोहली का क्या बता रहे थे? हाँ मैं विराट कोहली का क्या बता रहा था, लास्ट 10 मैचेस में विराट कोहली कितना स्कोर करा बोल के बोले तो लाइक विल डू द सम ऑफ ऑल द स्कोर्स 100 50 0 110 ऑल द स्कोर्स विल सबमिट एंड विल टेल दैट हे फॉर लास्ट 10 ओवर्स ही हैज डन ए 1000 स्कोर, राइट। बट व्हाट इज द यस। एवरेज ऑफ इट बोले तो, एवरेज इन एन एवरेज कितना करा बोले तो जब एवरेज करते हैं, करेक्ट। सो बराबर बराबर। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन लाइक विल डू वेदर इज अ सम और एवरेज। नहीं मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि लाइक लास्ट 10 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर क्या है विराट कोहली का, जब क्या करते हैं आप, बराबर बराबर, तब हाईएस्ट। हाईएस्ट हाईएस्ट के लिए हाईएस्ट नथिंग बट एवरेज। मैक्स। एकदम। मैक्सिफ। हाँ ऑब्वियसली इससे पहले सम इफ्स, अब देखो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ सोचो क्रिकेटर नेम एंड देन मैच नंबर एंड हियर इज अ स्कोर। लेट्स से हियर इज अ विराट कोहली, मैच वन, स्कोर इज 100 एंड मैं थोड़ा लेजी हूँ ना इसलिए ऐसा नाम से लिख के रख लिया। सो ये सब मैच वन का ही है। विराट कोहली का ये स्कोर नहीं देख सकता हूँ मैं, इसलिए फॉर्मूला में जाके
कैलकुलेट नाउ बोलता हूँ, फिर चेंज होता है और 93 ओके है मुझे। एल टी की कॉपी पेज स्पेशल वैल्यूज कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पेज कर लेता हूँ और एक बार मल्टीपल टाइम्स, आई मीन मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट सेम। अब देखो सब क्रिकेटर्स है ना, समझ में है ना, लाइक ये है मैच वन का स्कोर, ये अपना प्लेयर्स है अपने वाले, लाइक और उसके बाद अगेन सेम प्लेयर्स, मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैचेस का लिया हूँ मैं। ये सब में मुझे विराट कोहली का देखना है। देखो विराट कोहली का व्हाट इज हिज टोटल स्कोर, मैं सम ऐसा बोल के नहीं बोलूंगा, आपके हिसाब से आप करो। टोटल स्कोर इज व्हाट, एवरेज स्कोर ऑफ हिम, एंड ऑल्सो व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर डन बाय हिम, व्हाट इज द मिनिमम और लीस्ट बोलते हैं ना, लीस्ट स्कोर ऑफ द विराट कोहली। वही विराट कोहली मेरा फेवरेट, तो रोहित शर्मा भी है, चलो केएल राहुल को भी ले लेंगे। ये तीनों का मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या आप लोग? ये टास्क है मेरी तरफ से। आप लोगों में बहुत जने क्रिकेट फैंस होंगे ना, तो आप सच में कितना फैन है, कितना एक्सेल आता, पता चल जाता है इससे। In this cells, you write the formulas. In this green cells, you write the formula. I am sharing this task as well with you. I am sharing this file with you. Okay, silent हो गया? You'll be able to do it, right? Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Fine then. Thank you all. So Thank you, see sir. see you tomorrow, guys. Bye. Thank you, sir. Bye. Good night, sir. Good night. Good night. Thank you. Yeah. Good night, everyone. Bye. Bye.